Good evening, sir. Good morning, Dr. Vance. How are you doing? Good morning. I'm finishing up my yogurt before we start.
Sorry, what did you say? My laptop's volume was down. I'm finishing my yogurt Wow, before we great. start. Yes, you need energy. Hmm. Hello, Aaron. How are you doing? कैसे हैं आप? Sorry, clear नहीं आई आपकी साउंड. नॉइज आ रही है कुछ. हेलो. जी जी. अच्छा वो मैं कहीं बोल गया उस वजह से ना आवाज नहीं आती साथ में. तो आपने फैन पड़ा है उस वजह से काफी ना डिस्टर्बेंस. ओके, चलिए कोई बात नहीं. अभी आवाज तो आप अभी आवाज आ रही है. हाँ जी, आ रही है. आप ठीक हैं? घर वाले सब ठीक ठाक है? ठीक है खुदा की फजल है. आप सुनाएं. हाँ, आप शुक्र कैसे है. हाँ जी, शुक्र है, हैं? सब ठीक ठाक. आप जी सॉरी. आपकी गवर्नमेंट मीटिंग कैसे जा रही है? जॉब हाँ जी, हाँ जी जी, अच्छी जा रही है. अभी हमारा एनुअल हुआ था ना लास्ट वीक में, इसी वजह से मैं थोड़ी बिजी थी. प्रैक्टिसेस बड़ी होती हैं, बड़ी एहतमाम होता है. 6 को थी ना वो लास्ट थर्सडे, फ्राइडे को थी, तो इस वजह से मैं फिर यस. क्लास भी अटेंड कर पाई. Maria, Good morning, sir. are you translating today? Yes, sir. Are you feeling okay? Tika? ठीक है. Okay. You can start, sir. It's 8:04. All right, you want to get started? I'm ready, sir. Maria, if you're talking to me, I cannot hear you. Can you hear me, sir? Yes, now I can. Sir, we can start, sir. I'm ready. Let's start then. Let's
Arun, can you open us in prayer, please? इस सुहानी शाम के लिए खास तौर पर हमारे छात्रों के लिए और आपकी बस बातों को सीखने के लिए अपने मतलब के लिए मदद की दुआ चाहते हैं, आप प्रेरणाएं चाहते हैं और आज की क्लास के लिए पूरे सेशन के लिए आपका मेहरबानी वाला हाथ चाहते हैं, आप बातों की दुआ चाहते हैं ताकि हम सीखें जिंदगी में कोर्स करें और दूसरी जिंदगी तक पहुंचाने वाले खुदावन के अजीम नाम से हमें Amen. Okay. I'm going to share my screen. We are in 1 Samuel, the book of 1 Samuel. And we got through the call and birth of Samuel. And we pointed out how Samuel is a combination. Maria, go ahead for a second. हम जो है सैमुअल के किताब में थे और यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ी सैमुअल के बारे में कि इसकी जो है पैदाइश कैसे हुई और उसकी बुलाहट कैसे हुई, किस तरह से वो बादशाह बना। Okay. So Samuel's birth, we pointed out last time, it was special because the angel told Hannah that Samuel would be a Nazirite from his birth. And a Nazirite vow was not for your whole life. And second, it's something you chose for yourself, not something that somebody chose for you. But not in this case. God chose it for Samuel. So he's a special child. And go यहाँ ahead. पे हमने ये सारी स्टोरी सैमुअल के बारे में पढ़ी कि किस तरह से खुदा ने उसे चुना और वो जो है नजारत उसके सर पे थी क्योंकि वो खुदा का नजीर था। अब यहाँ पे नजीर जो होता है उसकी बुलाहट जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है कि यहाँ तक इस वक्त तक वो नजारत करेगा या उस पर नजारत रहेगी। And remember, Samuel is combining several things. First of all, he's a prophet. He's called of God. He's a prophet. Second, he's in Eli's house. He's now a priest. So he's a prophet and a priest. And then finally, he's the last of the judges. He's, if you will, a king. So he's a prophet, priest, and king all in one person. That makes him a foreshadowing, a hint of what's to come of Jesus. In the same way that Jesus is a prophet, priest, and king, Samuel is a prophet, priest, and king. So he's a special guy. सैमुअल के बारे में यहाँ कहा जाता है कि वो यीशु मसीह की अक्कासी करता है। किस तरह से? क्योंकि सैमुअल एक आम नबी नहीं था, उसके साथ तीन जो है ओहदे वो जुड़े हुए थे। वो बादशाह भी था, वो नजीर भी था और वो नबी भी था, काहिन भी था। और यही चीजें, तीनों चीजें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने की अक्कासी करती हैं क्योंकि यीशु मसीह भी सरदार काहिन भी थे, वो नबी भी थे और ये सारी चीजें करते थे। तो सैमुअल भी इसी तरह से नबी भी था, वो बादशाह भी था और नजारत प्रीस्ट
कोड यानी कि कहानत की खिदमत भी करता था। तो ये तीनों चीजें हैं जो कि सैमुअल के अंदर पाई जाती हैं, वो यीशु मसीह के आने की पेशेंगोई करती हैं। So, as we've already seen, God uses all kinds of people. And in the book of Judges, we saw women being used as judges. We have prostitutes being used of God. So nothing is too much for God to use. And in chapter 3 of First Samuel, we get the story of Samuel's call. Now remember, Samuel belongs to Hannah and whatever his dad's name is. It's slipping my mind right now. Um, um, oh, he doesn't even. Oh, Elkanah. Yeah. Now, in chapter 3, we've already had the birth, and he's with Eli. He's living with Eli. And this is what we're reading. Now, the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. Couple things to remember. Eli's sons, who are priests, were wicked, if you'll recall. We learned this last week. They were wicked. They would sleep with women who were bringing sacrifices. They would take the sacrifices before they were even offered and cooked. So they were just wicked. And Eli was telling them that they were wicked. Eli was he just seemed to be incapable of disciplining his children. But Samuel was a good boy. And look what it says. He was ministering in the presence of Yahweh, in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. It's not like the word of the Lord was a common occurrence. So God was being quiet. He wasn't ministering much to his prophets. And remember how this is going on. In the book of Judges, it keeps emphasizing how the priests are failing in their job to raise the people up to know the law. Because that's the priest's job, to teach you the law. Which is, if you're a pastor, for example, if you're studying to be a pastor, if you feel a call on God's life to pastor a community, one of your jobs as a pastor is to train the people in the law. Now, we don't live under the law of Moses anymore, but we do live under the law of Christ. And we have to teach our people the word. They have to know the word. And if you're a prophet, you don't control the vision. You don't control how often they come, but you do control how receptive you are. And Samuel was receptive, but Eli wasn't, and his children weren't. They're wicked. Eli's sons were wicked, and God wasn't going to use them. But Samuel was different. And let's look what happens here. At that time, Eli, whose eyesight had grown dim, so he couldn't even see, was lying down in his own place. The lamp of the Lord had not yet gone out, so it was early evening, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. So it's interesting, he naps in the tabernacle. Remember, the tabernacle is a tent. It's just a tent. And Eli's sleeping in there. That's his house. That's really odd. That's an intimate level of relationship. Of course, he's also just a little boy. He really doesn't know what he has there. But that it's about to change. Okay, Maria. यहाँ पे हमने सारी कहानी सैमुअल की पढ़ी कि सैमुअल किस तरह से एली काहिन के पास होता था। एली काहिन के अपने जो बेटे थे, हमने जो है लास्ट वीक में ये पढ़ा था कि एली काहिन के अपने भी बेटे थे, लेकिन वो
बिल्कुल भी खुदा की नजर में पसंदीदा नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि जो लोग खुदावंद की कुर्बानियां देने हैकल में आते थे, वो उनकी कुर्बानियों में से कुछ हिस्सा अपने लिए जबरदस्ती ले लेते थे। एक तो ये करते थे उसके बेटे एली की, और दूसरा ये करते थे कि हैकल में जो औरतें खिदमत करने आती थी उनके साथ जना करती थी, सही जवाबित नहीं रखती थी। तो ये दोनों गुनाह खुदा की नजर में बहुत बुरे थे। उसके दोनों बच्चे अच्छे नहीं थे। अब चूंकि सैमुअल जो है काहिन के पास रहता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमने किजात की किताब में पढ़ा था कि किजात की किताब में बहुत सारे काजी आए जिनको खुदा ने भेजा। हालांकि खुदा की नजर में अच्छे फेल नहीं करते थे, वो भी गुनाह करते थे, फिर खुदा उन्हें जो है वो दूसरे कामों में फंसा देता क्योंकि वो खुदा से दूर हो जाती है। अब शरीयत देना जो होता है वो काहिन का काम होता है, जो के खादिम होते हैं उनका काम होता है, तो खुदा के कवानीन को फैलाएं और बताएं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि कानून नहीं था तो लोगों का जोर दिल आता था, करते थे। पर सैमुअल जो है जब एली काहिन के पास आता है, तो क्या होता है हमने देखा कि वो एली काहिन के पास ही रहता होता। अब वो कि हैकल में क्योंकि एक मुकम्मल तौर पर इमारत नहीं होती थी, वो जो कि खैमों में रहते थे। तो इबादत खाना जो है ये खैमों की सूरत में ही बना होता था। तो जो है सैमुअल एली काहिन के पास ही लेटा हुआ था। और फिर क्या होता है कि अचानक से उसे आवाज आती है। अब यहाँ पे रोया जो होती थी वो मतलब ये नहीं पता था कि कब रोया या ख्वाब आए, क्योंकि खुदा की रोया उस वक्त उस दौर में जो है आमतौर पर साफ तौर पर पता नहीं चलती। तो एली जो होता है सो रहा होता है, और इसके साथ ही जो है वो भी होता है सैमुअल। अब ये उसकी खुदागर्दी है क्योंकि काहिन जो होते हैं वो खुदा के लोग होते हैं, तो उनमें खुदा का जो है वो होता है, हम्बल होते हैं, वो आजी करते हैं, इसलिए वो उतना गुरूर नहीं करते। और हम देखते हैं कि सैमुअल उसके पास ही लेटा हुआ था इबादत खाना के अंदर। इबादत खाना जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का टेंट था, एक तरह की जो है इमारत के तौर पर नहीं था। हाँ, वो वहीं पे सोया होता है। Okay. So Samuel's in his tent in the tabernacle, and God calls him. It says, and Yahweh called Samuel, and Samuel said, here I am, or yes, sir. And he ran to Eli. Now Samuel hears the voice of Yahweh, does not know it's the voice of the Lord, assumes it's Eli calling. And he runs into where Eli's lying down. He says, here I am, you called me. And Eli says, I didn't call you, go lie down again. So he wouldn't he lay down. And the Lord called him again, Samuel. Samuel arose and went to Eli. Here I am, you called me. And he said, I did not call, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. So he didn't recognize the voice. And the Lord called Samuel again a third time. And he got up and he went to Eli and said, here I am, you called me. And then Eli figured out what was going on. He said, Samuel, go lie down. And if he calls you, you shall say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैमुअल जो है एली काहिन के पास ही लेटा हुआ था। तो जब वो एली काहिन के पास ही लेटा होता है तो अचानक से उसे आवाज आती है कि सैमुअल। अब सैमुअल को चूंकि पता नहीं था कि सब क्या हो रहा है, किसने मुझे आवाज दी, वो यही समझा कि मुझे एली काहिन ने बताया। तो सैमुअल जो है भाग के एली काहिन के पास जाता है और कहता है कि मैं हाजिर हूँ, तुमने मुझे बुलाया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो आवाज नहीं दी। फिर सैमुअल वापस जाके लेट जाता है और दोबारा उसे आवाज आती है सैमुअल। और फिर सैमुअल एली के पास वापस जाता है और फिर कहता है कि तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूँ।
फिर जाके वो एली से कहता है कि मैंने तो नहीं पुकारा। अब वो फिर वापस जाके लेटता है, साथ ही एली काहन समझ जाता है कि यकीनन खुदावन ने उसे पुकारा है। अब जब उसने कहा सैमुअल से कि अब जब तुम्हें तीसरी बार आवाज आए, तुम्हें कोई पुकारे, तो कहना खुदावन मैं हाजिर हूँ। Okay, I'm going to stop sharing for just a second. I want us to talk for a second. You know, when I teach this class to you, I teach it thinking that you have a call on your life, that you're in this class because God has a call on your life. And so that's the way I approach it. This story of Samuel is actually very similar to something that happened in my life. I was a young man. I was 17 years old, and I was in high school at the end of my high school career before I was going to take off to college. And I was in my room in the afternoon, lying down, resting for a minute, when I heard the audible voice of God speak to me. It sounded like it came from the ceiling. And it was out loud. It was external to myself. And he said, "You are going to be a preacher." I've told you this story before, but I want to remind you of it. And I laughed. I laughed out loud at it. And he repeated it, said, "You're going to be a preacher." And then I got angry. I said, "No, I'm not. I am not going to be poor the rest of my life." And that was it. I never heard the audible voice of God again. Still haven't. But does God still move my life? Absolutely. And I am what I am now. So it was led me down a long, long path. I don't recommend fighting God. If he tells you to do something, just say yes. And that's what we're going to see in the Samuel story. I tell you that because you're going to have stories like this. You have experiences. I don't care if you're a 15-year-old girl, 45-year-old woman, a 30-year-old man. You guys, God's moving in your lives, and there's a purpose for this. Now you go, "But I'm not called to be a preacher." That's fine. You have a purpose in your life, and I want you to be sensitive to when the Spirit moves on you and to not be surprised by it. And more importantly, don't deny it. If God speaks to you, he speaks to you. You know, seek out your elders, but God is speaking. And in this day and age, he's speaking more and more. We're at a time in history where God is speaking. We're hearing about the whole villages in Iran that are converting to Jesus because the imam in the village has a vision of Jesus. We know about God using you. Look at you, man. You're coming together to study the word. God is going to use that. So I just want you to be sensitive to God speaking to you, and don't think he can't. Don't think you're not special. You are. That's why he's called you here. Now I'm going to go back to the story in Samuel. यहाँ पे डॉक्टर वैंस ने अपनी टेस्टिमनी लाइफ के दिए हैं, बहुत खूबसूरत। दैट टेस्टिमनी वाज वंडरफुल सर, गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट टीचर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सर ने बताया कि वो हाई स्कूल में थे और उनकी उम्र जो है 17 साल की थी। सर ने बताया कि उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल का था और मैंने सिर्फ स्कूल को खत्म ही किया था, अभी हमें कॉलेज जाना था। तो सर बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने कमरे में थे, लेटे हुए थे, कि अचानक से उनके कमरे में एक बहुत लाउड और क्लियर आवाज उन्होंने सुनी कि यीशु मसीह ने उनका नाम लेकर पुकारा कि आप जो है वो प्रीचिंग करेंगे, खुदा का कलाम शेयर करेंगे, आप मनाद हैं।
तो सर ने कहा कि जब मैंने ये आवाज सुनी, मैं हैरान होगा, फिर दोबारा से ये आवाज मुझे आई कि तू मेरे लिए मनादी करेगा, मेरा खादिम है। सर ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट सर ने बताया कि हमको गुस्सा आया। वो गुस्से में आए कि नहीं, मुझे तो गरीब नहीं बनना, क्योंकि खादम ज्यादातर गरीब होते हैं। तो सर ने कहा कि नहीं, मैं मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं, मैं नाती नहीं करूँ, मुझे खादम नहीं बनना। लेकिन उसके बाद से डॉक्टर वंश ने बताया कि उसके बाद से उनकी जिंदगी तब्दील हो गई, और अब आपके सामने है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी तमाम की बातों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद वो वाकई खादिम बने। तो सबसे अहम बात वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप सब जो कलाम सुन रहे हैं, बाइबल स्टडी ले रहे हैं, तो इसका एक खास मकसद है। यकीनन इसका मकसद ये है कि खुदा ने अपने कलाम के लिए हमें चुना हुआ, और हम खुदा के चुने हुए बरगजीदा खास लोग हैं, आम नहीं है। और सर ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को आम मत समझें। यकीनन ये जो आप क्लास ले रहे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं, उसकी एक वजह है कि खुदा आपसे अपना काम लेना चाहता है। खुदा ने आपको एक खास मकसद के लिए अपने पास बुलाया। और आजकल हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे गांवों के अंदर जो लोग, उन कौमों के अंदर जो कि कन्वर्ट होते हैं, मसीहत को तब्दील करते हैं, अब देखें कि खुदा उनसे सरियन बोलता है, खुदा कलाम करता है। और आजकल तो बहुत ज्यादा खुदा जो है बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, कलाम कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि सच्चाई क्या है। तो खुदा जो है कलाम करता है। और सबसे अहम बात जो सर ने बताई वो ये है कि अगर खुदा आपसे कलाम करे, आपसे बोले, आपसे बात करे, और आपको कुछ करने का कहे, तो कभी भी आप इनकार मत करिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़िए। और खुदा से इनकार मत करिए, क्योंकि सर ने कहा कि मैंने भी ये सोचा कि अब मेरा खुदा के साथ लड़ाई करना, खुदा से बहस करना फजूल है, क्योंकि खुदा ने कहा है तो ऐसा होगा। और यकीनन हमारी जिंदगी में भी अगर खुदा कोई मकसद रखता है तो हमसे बात करेगा, हमें बताएगा, और ऐसे वसाइल और जराए पैदा करेगा कि हम उसके कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन। All right. So Samuel goes back to bed, and the Lord came and positioned himself like the other time, said, Samuel, Samuel. And Samuel obeyed what Eli told him. He said, Speak, for your servant is listening. And the Lord said to Samuel, Behold, I'm about to do a thing in Israel at which the two ears of everyone who hear it will tingle. On that day, I will fulfill against Eli. That's his dad now, remember? Eli's like his adopted dad. I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house, from beginning to end. And I declare to him that I'm about to punish his house forever for the iniquity that he knew, because its sons were blaspheming God, and he did not restrain them. Therefore, I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Well, put yourself in Samuel's shoes. How are you going to respond to that? He lay there until morning. And then he got up and he opened the doors of the house of the Lord. And he's not saying anything. He loves Eli. He doesn't want to tell him this is going to happen. And Samuel was afraid to tell the vision to Eli. But Eli called Samuel and said, Samuel, my son. He said, Yes, sir. What was it that he told you? Do not hide it from me. May God do so to you and more also, if you hide anything from me of all that he told you. So Samuel told him everything and hid nothing from him. And Eli said, It is Yahweh. Let him do what seems good to him. So Samuel accepted the word. So what we get here is Samuel is operating as a prophet. Remember how the story began.
the word of the Lord was rare in those days. And Samuel gets a word from the Lord about Eli and establishes himself as a prophet. Okay, Maria. हम यहाँ पर देखते हैं कि एली ने सैमुअल से कहा कि तू दोबारा लेट जा, यकीनन ये खुदा है जो तुझसे बात करना चाहता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या होता है कि जब वो दोबारा लेट जाता है तो फिर खुदावन वाकई उससे कलाम करता है और खुदावन कहता है कि देख मैं इसराइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भिन्न आ जाएंगे। उस दिन एली पर जो सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उसे उसकी बदकारी से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घराने का फैसला कर दूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई है। आपको बताया गया है कि उसके बेटों ने क्या किया, तो खुदा जो है उससे ये बदला नहीं, उससे और उससे बेटों से। तो उसने एली के घराने की बाबत कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी जरिए से साफ होगी और ना हथिये से। और सैमुअल जो है सब ये सब सुनकर जो खुदा ने उससे कहा था कि उसका घराना एली का हलाक हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है एली उसका क्योंकि वो खादम भी था और उसका एक तरह से बाप भी था जो जिसने उसको अपने पास लिया हुआ था। अब सैमुअल उसको कुछ नहीं बताता, वो सुबह तक लेटा रहता है और फिर खुदा के घर को खोलता है। लेकिन सैमुअल जो है एली पर ये सारी रोया करने से, ये सारी बात जो खुदा ने उसे बताई थी बताने से डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि वो उसका एक तरह से बाप भी है रूहानी तौर पर। सैमुअल डरता है, उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन एली को पता लग गया था कि खुदा ने इससे बात की। एली ने सैमुअल को बुलाया और उसे कहा कि मेरे बेटे सैमुअल, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि वो क्या बात है जो खुदा ने तुझसे कही। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इसे मुझसे पोशीदा ना रख, यानी कि मुझे बता दे। अगर अगर तू कुछ इन बातों में से जो उसने तुझसे कही है छुपाए तो खुदा तुझसे ऐसे ही करे, बल्कि इससे ज्यादा। तब सैमुअल जो है वो डर जाता है, उसे कहता है कि खुदा का काहिन है, मुझे इसको बताना चाहिए। तो सैमुअल जो है सारा हाल उसको, सारी बातें जो खुदा उससे उसके बेटों के मुताबिक और उसके मुताबिक कहता है वो बता देता है, उसे कुछ नहीं छुपाता। और फिर जो है ऐसे ही सैमुअल जो है बड़ा होता जाता है, खुदा के साथ उसकी बातें हैं कुछ भी जो है वो कमी नहीं है। Okay, so the story just kind of skips ahead a little bit. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. I hope you understand what that means. So if he gave a word of the Lord, it came true. So Samuel was established as a prophet, and it says, and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of God. Now, तो सब कुछ जो खुदा सैमुअल के लिए उसने सैमुअल को कहा था, खुदा ने बात की थी रोया में, एक भी चीज जो है वो कम नहीं होती, सब के सब पूरी होती है। और दान से बैर सभा तक जो है वो सैमुअल खुदा का नबी कहलाता है, क्योंकि खुदा ने उससे बात की है, तो खुदा का नबी कहलाता now remember, Dan is a city at the very north of Israel, and Beersheba is the city at the south. So when it says all Israel from Dan to Beersheba, that's just an expression meaning from Dan to Beersheba, from the length of the whole country knows. The whole country knows that Samuel was established as a prophet of Yahweh. And Yahweh appeared again at Shiloh. Now, where is Shiloh? Right here. Shiloh is right in the middle of the country. That's where the tabernacle is. He's in the middle. Okay. The Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. So Samuel is taken over
for Eli, or he's in the process. We're about to get that story now, where he's going to replace Eli as the high priest. And even though he's adopted, it's, remember, his mom and dad gave him up to Eli as a Nazarite. And so this is a special child. All right. And the word of Samuel came to all Israel. So all Israel knows Samuel's a prophet. And that brings us to the next part of it. Go ahead, Maria. हमने देखा है कि दान और बेरशबा तक जो है सब जान रहे थे सैमुअल खुदा का नबी है। अब दान और बेरशबा को हम देखें तो इसराइल की सरहदों से मशरिक से मगरब, शुमाल से जनूब तक पूरे इसराइल में ये बात सब तक फैल गई कि ये सैमुअल जो है वो नबी है। इसका मतलब है कि सब जानते हैं कि खुदा की तरफ से नबी मुकर्रर वो सैमुअल है। अब वो एली काहिन के पास रहता है। आपको पता है कि एली काहिन उसका अडॉप्टेड बेटा है, उसने उसको अडॉप्ट किया। उसका मतलब ये है कि उसने उसको अपने पास चुना है, क्योंकि खुदा की तरफ से वो नजारत काम करेंगे, क्योंकि खुदा का नजीर है, चुना हुआ, एक मखसूस किया हुआ। हम देखते हैं कि उसकी माँ ने उसको एली काहिन के पास छोड़ा था, तो उसकी वजह थी क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ था, मखसूस था। तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं कि दाद से बैरशबा का मतलब इसराइल के बहुत बहुत सारी सरहदों में पता चल चुका है कि सैमुअल जो है नबी। All right. So the book, remember, this is all part of the prophetic history. So it's Joshua, Judges, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings. And remember, this book is written by an unknown prophet. I call him Ralph, but it's a prophet whose name we don't know. He's the one telling us this story. And he's telling it from 1,000 years later. Anyway, we're in the first part here where we're establishing Samuel as this prophet, priest, king figure. But he's not really a king. He's more like one of the judges. In fact, he's the last of the judges. He's going to rule Israel. But what Israel really needs is a king. Remember at the end of Judges, the book kept saying, and there was no king in Israel, and everyone did what was right in their own eyes. So what we're getting to is we're going to get a king for Israel. But Samuel's the one running things right now. And this is Israel. This part right here on the coast, from Ekron to Gaza. You all know where Gaza is. You hear about it in the news. That's still Gaza today. This strip of land is where the Philistines are. They're on the coast here. And the Philistines actually came from here, from Greece. You guys live off my map to the right. You're not on my map over here. But you know where your home country is, Pakistan. Well, this is Greece. And Greece got invaded by some folks, and the people that lived here got pushed out. And they got pushed out all along the eastern shore of the Mediterranean, all kinds of Greek peoples. And one of the tribes was the Peleshit, the Philistines, and they settled down in the lower right-hand corner of the Mediterranean. They settled right down here, which just happens to be Israel. And that's these guys.
and they're settled. The Philistines are here. There's foreign people, but they've now been here for almost 200 years. This is their home too. And everybody knows everybody. But this is the Philistines, and this is the Canaanites, and the Israelites are all in here as well. So we're up here in Shiloh, remember? This is Shiloh. So Israel went out to battle against the Philistines, of course, because that's what you do. So they're going to have a battle. They encamped at Ebenezer, and the Philistines encamped at Aphek. Well, these are places where they're really talking about Aphek is way up here. So the Philistines are down here, and the Shiloh's over here, and they're having a battle. Ebenezer's not up there. Yeah, there's Ebenezer. Right in the middle of the coast. So they encamped at Ebenezer, the Philistines camped at Aphek, and the Philistines drew up a line against Israel. And when the battle spread, Israel was defeated before the Philistines, who killed about 4,000 of them. So, what I want you to see is that Samuel's name's not mentioned here, but he's running things. And the Israelites got defeated. And the people go, what's going on? How are we being defeated by the Philistines? And when the people came to the camp, the elders of Israel said, why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let's bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that it may come among us and save us from the power of our enemies. So the people sent to Shiloh and brought the ark of the covenant there. This is important for a couple of reasons that you'll see. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of the Lord. And as soon as the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel gave a mighty shout, so the earth resounded. Remember what we said. Samuel just gave a word that Eli's family was going to be eliminated from taking care of the ark. And what we're seeing is how this is happening. And the Philistines were afraid because of the ark of the covenant. But then they said, come on, let's go. We've got to fight, even though they've got the ark of the covenant with them. So the Philistines fought, and Israel was defeated. And they fled, every man to his home. And there was a great slaughter, for 30,000 foot soldiers of Israel died. And the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. That's what you're supposed to see. Is this the death of the two sons of Eli, who were wicked, if you remember. And then word gets to Eli back at the tabernacle that the ark's been captured and his sons have been killed. And it says, as soon as he mentioned the ark of God, Eli fell over backwards from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died. For the man was old and heavy, and he had judged Israel 70 years. So notice that Eli was classified as a judge, like the judges in the book of Judges. So Eli's dead, his sons are dead. We're getting a transition, and it's a fulfillment of that word that Samuel got
that kicked off his entire ministry and established Samuel as a prophet. Go ahead, Maria. और यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। आपको ये नक्शा जो सारा दिखाएगा कि सीला कहाँ था, अभिनगर कहाँ था, ये सारी चीजें बताई कहाँ कहाँ थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि फलस्ती जो है इसराइली से लड़ने को आते हैं। जब फलस्ती इसराइली से लड़ने को आते हैं तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि क्या हुआ कि वो लोग शिकस्त खाते हैं, इसराइली फलस्तियों से शिकस्त खाते हैं। आपको नक्शे के अंदर गाजा दिखा है जहाँ पे अभी दिखाए गए हैं। और हम देख सकते हैं कि जब फलस्ती इसराइली से लड़ने आते हैं तो इसराइली जो है फलस्तियों से शिकस्त खाते हैं और 40,000 लोग मारे जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि हम शिकस्त क्यों खा रहे हैं, क्योंकि खुदा तो उनको बचाता रहता है, तो फिर हम ये शिकस्त क्यों खा रहे हैं। वो कहता है कि इसकी वजह हो सकती है ये हो कि सेला के अंदर खुदा के अहद का संदूक रखा है, जब वो हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम शिकस्त खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सेला में से खुदा के अहद का संदूक मंगवाया। खुदा के अहद का संदूक भी आ गया, फिर भी जो है वो क्या होता है कि इसराइलियों पर फलस्तीन भारी ही पड़ा। और यहाँ पर क्या होता है कि फलस्तीन जो है एली के दोनों बेटे कुफनी और कफास, उन दोनों को मार देते हैं, दोनों कत्ल हो जाते हैं। और क्या होता है, एक बंदा जो है लड़ाई में से जो है एली के पास आता है, उसको बताता है कि क्या हुआ जंग में, इस तरह से हम शिकस्त पा रहे हैं और खुदा के अहद का संदूक भी छिन गया। तो एली जब ये सोचता है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। जब वो शख्स को खुदा के अहद का सलूक बताता है, उसके बेटों के बारे में बताता है कि वो मर गए, अहद का सलूक भी चला गया, क्योंकि अहद का सलूक उस वक्त बहुत मायने रखता। जब अहद का सलूक साथ होता था तो इसराइली जो है मुख्तलिफ जंगें जीतते थे। तो इसलिए जब एली काहिन सुनता है कि अहद के सलूक हमसे छिन गए, खुदा की हशमत हमसे जाती नहीं, तो एली ये सुनकर बहुत ज्यादा गम खाकर और कुर्सी पर से गिर पड़ता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक भारी मोटा इंसान था, एली काहिन जो है। तो जब वो गिरता है, उसकी गर्दन टूटती है, तो वो भी नहीं। तो ये यहाँ से सारी बातें जो खुदा ने जो है सैमुएल से कही थी कि इस तरह होगा और एली के बेटे भी मरेंगे, क्योंकि इन्होंने खुदा के घर में जो है ये गलत काम किए। और इस तरह से खुदा ने ये सारी बातें जो सैमुएल से कही थी वो पूरी हुई। किस तरह से जो है खुदा ने एली काहिन और उसके बेटों से जो है अपने गुनाह का बदला। Okay. Now, in the story back in chapter 5, the Philistines captured the Ark of God. They brought it to Ashdod. Let's look at the map. Ashdod. There are 5 Philistine cities that are famous: Ekron, Ashdod, Ashkelon, Gaza, and Gerar. Anyway, so this is where the Philistines are. But they're in Ashdod on the coast. They have the ark, and they don't know how to handle it. This ark of the covenant of God. They think it's like an idol. It's not, but that's the way they treat it. And they stick it in the temple of Dagon. Dagon. He's a wheat god, a god for crops, for growing wheat. And they're in his temple, and they put the ark there. When they wake up the next morning, the idol Dagon has fallen over next to the ark. And this keeps happening. And so the hand of the Lord is heavy against the people of Ashdod. And he gives tumors on the people there. And they're going, what's going on? We captured this ark in battle, and now we're suffering. Look, we can't keep the ark of the God of Israel here with us, for his hand is too hard against us. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines
and said, "What shall we do with the ark of the God of Israel?" And they said, "Let the ark of God of Israel be brought around to Gath." There, one of the 5 Philistine cities: Ekron, Gath, Ashdod, Ashkelon, Gaza. Let it be brought to there. So they brought the ark of the God there. But it had been brought around, the hand of the Lord was heavy against the city, causing a great panic. And the men got tumors on their skin there. So they sent the ark of God to Ekron. So they keep passing it around, Ashdod to Gath to Ekron. So they just send it to the next city, the ark of the Lord. And the people of Ekron go, "No, you don't. We don't want this thing around us. You're just sending it here to kill us." And they, "No, it's time to send the ark back." So they got, well, we'll just read the story. The ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. And they got the priests together to tell them what to do. And they said, "Well, you bring it up with cattle to haul it up. You got to send a sacrifice with it, though, an offering, and let them know how to put it. If you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means return him a guilt offering. Then you will be healed, and it will be known to you why his hand does not turn away from you." And they said, make little 5 golden tumors and 5 golden mice and send it with you. So they do. And what they did is they took the ark and put it in a cart, and they attached 2 cows to it, oxen, to haul it. And they set the ark on its way. So what they did is they come up here and they release the ark and send it up. So what you get is an ox cart being drawn by 2 oxen with the ark in the back, and they send it up. And said the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stopped there, and they tore down the ark. They broke up the ox cart, and they offered the oxen as a sacrifice. And the Levites took down the ark of the Lord and the box that was beside it, and toward the golden figures, that is the mice. And they set upon the great stone. And the men of Beth Shemesh offered burnt offering and sacrificed sacrifices on that day to the Lord. When the 5 lords of the Philistines saw it, they returned that day to Ekron. So, and he, Israel, Yahweh, struck some of the men of Beth Shemesh because they looked upon the ark of the Lord. He struck 70 men of them, and the people mourned. And the Lord struck the people with a great blow. So they sent messengers to another city a little further up. Really? Oh, shoot. My bad. There we go. So they come up here.
this heading towards Jerusalem. All this conflict is taking place within Israel because people are getting hurt because of having the Ark of the Covenant. This is the part of the Holy Tabernacle, and it's just out. And the men of Kiriath Yearim came and took the Ark of the Lord and brought it to the house of Abinadab on the hill, and they consecrated his son Eleazar to have charge of the ark. From that day, the ark of the law was lodged at Kiriath Yearim. A long time passed, some 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. So, sorry. They're up here, and the ark is going to stay there. And what we're entering is a different phase in the history of Israel. The ark has been defeated, and they're up here. The ark has defeated the Philistines. Now, remember, the Philistines defeated the Israelites in battle, killed Eli, or killed his sons, and Eli died. This is executing the judgment of God on them. And the ark is stuck up here in this town, where it's going to stay, as it turns out, until David becomes king, which is going to be some 20 years, according to the text that we just read, 20 years later. A long time passed, some 20 years. So, and Samuel said to all the house of Israel, if you return to Yahweh with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth, which is the goddess, among you, and direct your heart to Yahweh, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. So the people of Israel put away the Baals and the Ashtaroth, and they served Yahweh only. So Samuel is governing, he's judging, just like the judges did. It says right here, and Samuel judged the people of Israel at Mizpah. So Samuel is the judge of Israel. Remember what I said, prophet, priest, and king. He's in control. And this is setting the stage for what's going to happen next. Samuel's in control. And then in the next chapter, chapter 8, when Samuel became old, he made his sons judges over Israel. And it turns out his sons are just like Eli's sons. They're not good either. Yet his sons did not walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. So they ended up behaving just like Eli's two sons did. And the people get tired of it. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah, which is his hometown, and said, behold, you're old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us like other nations. But this thing displeased Samuel when they said, give him a king. And Samuel prayed to Yahweh, and Yahweh said to Samuel, no, this is from me. Obey the voice of the people and all they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. So Samuel has been anointed king by God. He's running everything. He rescued the ark, even though the Philistines defeated Israel. And the people want a king. Samuel, you're old. You're going to die soon anyway. And your sons are not you. They're just like Eli's son, corrupt. Choose a king for us. Which Samuel read as a rejection of him. And God said, no, it's not you they've rejected. It's me. And that's what's going to happen next time, is they're going to pick a king. Go ahead, Maria.
यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि फलस्तीन जब इसराइल से जंग करते हैं तो खुदावन के अहद का सबूत जो है अशदोद के लिए होते हैं। फलस्तीनों के 5 बड़े शहर हैं जिसमें अशदोद, अतून और फिलिस्तीन है, गाजा भी इसमें शामिल है। फलस्तीन जो है खुदा के अहद का सबूत अशदोद को ले जाते हैं और फिर क्या होता है तो वो उससे ले जाकर कहाँ रखते हैं, दिजोन के मंदिर में। दिजोन जो है इनका देवता है जो कि फसलों को, जो फसलों के लिए उनकी फसलों को मुहैया करते हैं, कि बाजार मुहैया करता है। तो दिजोन के मंदिर में उसके घर के पास जो है खुदावन के मुकद्दस संदूक को रखते थे। और ऐसा होता है कि जब अशरूदी जो है जो है, सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि दिजोन खुदावन के संदूक के आगे गिरा पड़ा, उसके सारे उसके पास टूट गए। क्या होता है फिर जब वो देखते हैं कि हमारी जो है देवता का, हम जिसको खुदा मानते हैं, उसका ये हशर हुआ होता है। फिर सुबह सवेरे जब वो उठते हैं तो बेजून जो है खुदावन के संदूक के आगे उन्हें गिरा है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। और क्या होता है कि फिर इसी वजह से खुदा के अहद का सबूत लेने की वजह से उनके बदनों के ऊपर ये गिल्टियां, ये सारी निकल आती हैं, क्योंकि खुदा के अहद का सबूत वहां होता है। तो फिर क्या होता है कि खुदा उनका हाथ जो है वो अशदूदियों पर बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुदा के अहद को सलूक कर लाए। अब जब वो खुदा के अहद के सलूक को अपने पास लाए हैं तो अशदूदियों पर बहुत ज्यादा खुदा उनको हलाक करता है, उनको मारता है, गिल्टियों से और मुख्तलिफ चीजों से मारता है। और अशदूदी जब ये देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, उनकी गिल्टियां निकल रही हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम जो है खुदावन के अहद के संदूक को दूसरी जगह पे भेज देते हैं। फिर फलस्तीनी सब जमा होते हैं, कहते हैं कि हम इसे कहाँ लेके जाएं। तो ऐसा करते हैं, वो कहता है कि हम जो से दूसरी जगह पर ले लेते हैं, अक्रूर। अक्रूर में ले जाते हैं ताकि हमारे पास से बला टल जाए। फिर जब वो खुदा के हद के सबूत को अकरूम के पास लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इसराइली वहां से चिल्लाने लगते हैं कि तुम खुदा के हद का सबूत हमारे पास क्यों भेज रहे हो, इसलिए भेजो कि हम भी मर जाएं, हम भी हलाक हो जाएं। लेकिन क्या होता है, फलस्तियों के सरदारों को बुलवा कर जमा किया, उनसे कहने लगी कि इसराइल के खुदा के सबूत पर रवाना कर दो कि हम उसे अपनी जगह पर ले जाना और हमारे पास से दूर रखें, ताकि हम और हमारे लोग जो मर रहे हैं, गिल्टियों से मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, वो हलाक ना हो। फिर क्या होता है कि जब वो अहद के संदूक को लेके जाते हैं तो फिर कहते हैं कि इसके साथ हम जो है वो खुदा के सामने जो है नजराना भी पेश करें, उसे जो है ऐसे चीजें पेश करेंगे ताकि हमारी जो है ऊपर से ये बला जो आई है खुदा के अहद के संदूक की वजह से वो टल जाए। और साथ ही खुदावन को जो है वो साथ में नजराना भी देते हैं, ये सोने की 5 चुइयां और ये सारी कहते हैं कि गिल्टियां देते हैं कि हमारे पास से गिल्टियां और ये सब चीजें ना हो, हमें पेश ना हो। फिर नजराना भी देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो देते हैं तो नई गाड़ी में उनके हल वाली ये गाड़ी होती है जिसमें हल चलाया जाता है, वो कहते हैं कि गाड़ी बनाए और 2 दूध देने वाली गायें जिन्होंने कभी भी जोया ना हो, यानी कि वो पाक हो, खुदा के सामने पाक हो, उनको लेते हैं। और उन गायों की गाड़ी में उनके बच्चों को ये सारी जो 2 गायों हैं उनके गाड़ी के अंदर ये सारी नजराना लेके खुदा के हद के संदूक को हम वापस भेजते हैं। जब वो उन्हें भेजते हैं तो क्या देखते हैं कि बैत शम्स के हाथ जब वो वहां जाते हैं तो ये बैत शम्स के यहाँ रुक जाते हैं और वहां पे उन्हें देखते हैं कि ये ये बला हमारी वजह से नहीं है, नहीं नहीं आई। और खुदावन के ऐद के सलूक और सोने की चीजों और अपनी गिल्टियों को मूर्तियों के साथ सलूक में रखे गाड़ी में चलता रहता है और बैतशम का सीधा रास्ता लेते हैं। ये गायें जो है सीधा चलती हैं, वो सड़क की तरफ जाती हैं और दाहिने और बाएं नहीं मुड़ती। और क्या होता है कि फलस्तीन सरदार उनके पीछे पीछे चलता है कि वो देखे कि क्या हो रही, कहाँ जा रही।
फिर वो क्या देखते हैं, गाड़ी बैठ सब्जी यशवा के घर की एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। तो जब वो वहां पर खड़ी हो जाती है तो वहीं पे उन्होंने गाड़ी की लड़कियों को चीरते हैं और वहीं पे खुदा के लिए कुर्बानी गुजराते हैं। और जब वो कुर्बानी गुजराते हैं तो फिर जो है खुदा उस कुर्बानी को कबूल करता है। जब फलस्ती देख लेते हैं कि ये सब हो गया है और क्रून को वापस चले जाते कि ये सब कुछ हो गया है, अब हमारे पास से जो खुदा का अजाब और कहर जो है वो नहीं नाजिल हो। जब वो वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि सैमुअल जो है वो खुदावन का चूंकि चुना हुआ है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं और सैमुअल से कहते हैं कि तू हमें बादशाह दे। उसकी वजह ये है कि सैमुअल के जो दो बेटे थे उसके भी बेटे थे, लेकिन वो भी बिल्कुल एली काहन के बेटों की तरह ही वो गलत काम करते हैं, वो भी खुदा को पसंद नहीं थे। इसलिए वो सैमुअल से कहते हैं कि तू हमें बादशाह दे। इस बात से वो नाराज तो होता है कि वो मुझे बादशाह मुझसे मांग रहे हैं, हालांकि इसकी वजह दूसरी थी। लेकिन वो फिर भी नाराज होते कि तुम मुझसे बादशाह क्यों मांग रहे हो? हालांकि वो नबी था, खुदा का मंसूर था, चुना हुआ था, लेकिन वो खुदा से फिर भी बादशाह तलब करते हैं। उसकी वजह भी ये थी कि आने वाला बादशाह ये सारी राह उसके लिए तैयार हो रही थी। Okay, so when we come back next week, we will start the story of Saul, because that's where we're going to, the first king of Israel. And stuff, that's where we'll pick up. So we went a little long, I apologize. But remember, God has a call for your life as well. And I want you to pursue it with all your heart, your call in your life. Even if in your mind it's only learning how to read the Bible. That's something. Pursue that call with all your might. Okay. Let's I'm gonna leave now and I'll see you next week, okay? Thank you very much, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you so much. God bless you. Okay, if I leave, am I gonna shut down the meeting? Tell you what, Who is the host? it says I am the host. I'm gonna Okay, sign then it to host. I'm gonna sign it to Arun. Aaron. Okay. Now Aaron can end the meeting. ओके मैम, फिर क्लोजिंग बेल करते हैं, फिर जी मैम आपके साथ मिलकर हम काफी दुआ करेंगे, फिर हम मीटिंग किसके साथ मिलकर दुआ करेंगे? आपके साथ मैम। मैं ओके, चलें दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। आपका शुक्र, आप तारीफ करते हैं सर वाइंस के लिए, जिनको आपने खुदा सेहत दी और फजल ता किया कि वो हमें खुदा ये कलाम में से बातें सिखा सकें। खुदा इस उम्र में भी खुदा आपकी खिदमत करते हैं, जैसे भी खुदा उनकी जिस्मानी हालत है तब भी वो आपका खुदा आपकी खिदमत करते हैं और आप में मसरूर है। आपका शुक्र अदा करते हैं, उनकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं, उनको बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती ताकि जिनके घराने के सारे लोगों को संभालिए। और जितने लोग आज इस क्लास में शामिल हुए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए, हर एक की जिंदगी के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हमें से हर एक को बड़ी बरकत अता कीजिए। और वाकई हम में से हर एक की जिंदगी में जो भी है खुदा आपकी कॉल लेकर जो मंसूबा है आपका, उसके लिए हम सबको तैयार कीजिए, फजल अता कीजिए कि हम बाइबल को भी अच्छे तरीके से पढ़े, समझें और आपकी मर्जी को जाने और आपके तरीकेकार को जाने, और जिस तरह से आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते आए हैं हम इस बात को समझें और ये सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में लेते जाएं। जो भी ये पॉजिटिव चीजें हम जिंदगियों से देखते हैं हम उसको अपनी जिंदगियों में लेते जाएं, और जो भी है ऐसी चीजें जिनसे आप नाराज हुए, फजल अता कीजिए कि हम अपनी जिंदगी में से उनको निकालते जाएं और कामिल बनते जाएं, ताकि हम खुदा आपसे और ज्यादा बरकतें पा सके और आपकी खिदमत हम बड़े एहसन तरीके से कर सके और बहुत सारी जिंदगियों को
हम बचाने वाले हो सके। हमें मसा कीजिए अपने कामों के लिए, हमें सारे को है खुदा ब्लेस कीजिए, हमारे टाइम पर बरकत अता कीजिए खुदा कि हम मैनेज कर सकें। हमें खुदा फजल अता कीजिए कि मैं खुदा अपना दिल अपने सोचो ख्याल आपके ताबे कर सके। हम सबकी मदद कीजिए, हमारे घरानों को बड़ी बरकत अता कीजिए, और खुदा इस मुल्क में हमारे वसीले से बड़ी तब्दीली आप लेकर आइए, ताकि खुदा जिंदगी बहुत सारी बच्चे यहाँ पर है खुदा। सर कहनत के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, सबको से तंदुरुस्ती सलामती अता कीजिए आसमानी बाप। और ए खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए आप और ज्यादा वसाइल मुहैया कीजिए, ताकि यहाँ सब काम अच्छे तरीके से हों। और ए खुदा आपका खादिम सर कहना जिस भी तरह से आपकी खिदमत करते हैं, कलाम को फैलाते हैं, प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के नाम का, अंजील का प्रचार करते हैं, जिंदगियों को बचाना चाहते हैं, और लोगों को तरक्की देना चाहते हैं, मसीहियों को जिस भी तरह से हर किसी की मदद करते हैं, उसको आप अपने ज़ुल्म में कबूल कीजिए, और उनको बड़ी बरकत अता कीजिए, सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता कीजिए, और उनकी हर परेशानी को अपने बेटे यीशु के नाम में दूर कीजिए, उनके वसाइल पर बड़ी बरकत अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Okay, thank you very much. God bless you.